Yeah. So let's Not yeah. uh, let's inspect this. Okay. So in console, we should get data. Okay. Let's see. Password 1 2 3 4. Submit करने पे. See, we are getting data. Okay. Now what we will do? We will pass this information to our Redux store. That is our main motto. Okay. Now our main motto is कि we are having one component in which we are rendering a form, and by submitting this form we got some data. What data is? Data is name, email, and password. Now our motto is we want to pass this information to Redux store, so that if any other component need data, they can fetch from this store. Okay, one last time. We got the information. We want to pass this information to a Redux store, so that if any other component needs data, they can fetch from that store. Okay. Okay. Again, I have to read chat. Please just came to check if you guys are okay with this change. I don't know. Okay. So yeah. Okay. So we'll do it. Okay. Let's draw something. Then we will start. Okay. Please pardon for background noise. Okay. Is it whiteboard visible to you? Please speak. Okay. Please. Yes. Okay. Okay. So yesterday, what we are doing, what I have explained, we have this UI component. Let's suppose in our case we are having a form component. So we are having a UI. Okay. We will have some action here. Okay. We will have some action here. Okay. We will have reducer here. Okay. We will have reducer. Okay. That is store. In reducer only, if you could remember, we have written all this information. If action is equal to this, we will make these changes. If action is equal to this, we will make these changes. Okay. So in reducer only, we have done all the switch cases. We have not used this if else. Why? Because we have so many actions. So we haven't used if else. We can use if else, since we are having so many actions. So we have used actions dot no switch cases. Okay. So we have used switch, and based upon the action type, we will make the change in store. Okay. This is how it happened in cycle. Okay. We'll pass in UI, we'll pass a different action. We will dispatch, basically the words come dispatch. Okay. In a way, what you can, in React also we will dispatch an action. Okay. This is a term which we will use to in React. So in from UI, from this form component, we will dispatch an action. Try to learn this term. We will dispatch an action, and then this action will make changes in reducer. Not sorry, based upon this action, reducer will make changes in store. Okay, this is how we will do CUD, create, update, and delete. Okay, we'll use dispatch. If you want to get data, again we will call this use selector, and we will get data in other component. So this is how it works. Okay. Uh, Again, one last time, then we will move ahead. Okay. Try to imagine this thing. We have so many components here in UI. Just in now in current scenario, we are having one form. Okay. We are first, or what is our motto? Our motto is to whatever we are getting form, भाई मत करे यार, पढ़ने आओ पढ़ो. Whatever we are getting form, ठीक है. Whatever we are getting data from form, we should pass to our store. That is our main motto. Okay, ठीक है. Now how we will do it? We have, since we are creating something, since we are creating something, then we will use dispatch, as we learned yesterday. Okay. So what we'll do, we will dispatch one action from this form component. We will dispatch an action. Okay. We have made reducer, and what reducer is, reducer will do what reducer does. Reducer depend on action types. It will make changes in this store. What reducer does, depend on action types. ये कौन सा एक्शन टाइप इसने डिस्पैच किया है, उसके अकॉर्डिंग जो रिड्यूसर होगा, वो टाइप के अकॉर्डिंग इट विल मेक चेंजेस इन स्टोर. अब वो चेंजेस क्या होंगे, क्रिएट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, वो डिपेंड करेगा कि जिस ये जो फॉर्म ने कौन सा एक्शन को डिस्पैच किया है.
ठीक है. I think this is enough for this drawing thing. We'll start coding. Okay. So let me clear our drawing and let's go to new share and go to no VS Code. Yeah. Meanwhile, I can read chat. What the chat here? So till now, any doubt? No, clear. Okay, okay. So I think you have learned this use this present. Okay, चल ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई. ठीक है. Let's go to minimize this. Fine, I'll cut it. So yeah, चलो ठीक है. Now we will import this action types. Again, we will open this reducer. Okay, we have one action type that is create reducer. ठीक है. तो हमारा मोटो क्या है कि जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो वी विल हम इसको इसको बताएंगे, सॉरी इसको कॉल करेंगे. वो कॉल कैसे करेंगे? वी हैव मेड दिस हियर व्हाट यू कॉल एक्शन कि we will pass this create user this thing user action helper. While submitting this form, we'll pass this action one more time. While submitting form, we will pass this action, this function. Okay, a function क्या है? This function will return one object. This function will return one object. Object contain this type, action type. Okay, and second, this data. And what is this data? This data is name, email, and password. What we want, what we supposed to update in the store. That is this data. Okay, now it's our logic how we'll pass this data. We'll see it how we'll pass. Okay, again, and depend on this action, depend on this creator user action. We can see here, depend on this creator user action, depend on this creator user action, whatever this action contain. First of all, object, this action is object contain types and payload. So whatever payload we are having in this action will pass to user. What is this user? This user. Okay, let's see how it works. Okay, so first of all, since we have to pass this function and we have to pass this method. So first I have to import on this form thing. Okay, so go to our component, go to our this register form. I have to import. Okay. So import no. Since yeah, why I'm using this curly braces. I have stored. I haven't exported default. Okay, if I have exported defaultly, then I should not use curly braces. No, we can have so many functions, like we can have so many functions like this, like this. Okay, just imagine this thing. We can have so many functions. Since we want to use this specific only, that's why I have to use curly braces on this component. Okay, so I will remove this all this. Okay, so what is name? User action helper. No, let me cut it and we'll paste here. So register form. Okay, so import in a curly braces. Okay, sorry, from okay, where it is. It is on. It's not giving me Redux. Okay, yeah, you're seeing me. So where it is it in Redux, and again it is in action, and again it is in action type. And if I write his first letter, it will give me hint. What was the first letter? Let's say U. User action helper. Can you see it? It is giving me hint. Okay. Please don't forget to use this curly braces. Since we are not using this export default, we should use this curly braces. That thing is clear. Okay. Now we import this user action. Okay. See, use state and use effect. These two hooks are from React. Okay, but use dispatch and use selector. These two hooks are from React Redux. So I have to import this two hooks. Use dispatch. Use dispatch. Sorry. Dispatch. Dispatch and use selector. Use selector from React Redux. Okay. So we have imported these two hooks. Okay. We are not since we are not something something getting data from, so we are not reading data, so we will not use this use selector. We'll use only use dispatch. Why? Because we are exporting something, we are not getting, we are exporting, we are doing CUD, we are getting something. Okay,
In another component, we will when we'll need data, we'll use view selector. Okay, yeah, let's no use this thing. So const dispatch is equal to use dispatch will create this instance. Okay, now we come here and we'll dispatch, we'll use this dispatch, use this dispatch. Okay, we'll use dispatch. Okay, now in this bracket, we have to mention which action you want to dispatch. Okay, which action you want to dispatch. We want to dispatch this action. Okay, okay, we will dispatch this action. But this action, as you can see here, this user action helper, this user action helper takes an argument. This user action helper takes an argument which will pass it to payload. Means whenever we'll dispatch this action, we'll pass some data. And what data we should pass? Anyone can write on chat. Which data we supposed to pass? Please write on chat. Again, I'll ask. ठीक है? I think you didn't get the question. Okay. Once again, please try to listen. User input. Right, Balvin. Okay. Again, because I think okay. I have asked. Okay. Once again, we are dispatching this action. Okay, this basically this function. Okay, that is on this function, but in a terms we will call it as action. We are dispatching this action. Okay, this action takes an argument. Okay, you can see here this thing takes an argument, and this argument will get passed to payload. ओके दिस ध्यान देना भाई, दिस एक्शन, ये जो डेटा आ रहा है ये पास हो रहा है पेलोड को. ठीक है, यही थोड़ा थोड़ा जो चीज है ना थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो मेरी बातों को ध्यान सुनना तक आप समझ पाओगे. हमने इसको डिस्पैच किया, लेकिन ये जो है ये कुछ ले रहा है आर्गुमेंट ले रहा है रजिस्टर डेटा को. ठीक है, और जो भी ये आर्गुमेंट ले रहा है वो हम पास कर रहे हैं पेलोड को. ठीक है, और इन रेड्यूसर में जो भी डेटा आ रहा है पेलोड से वो हम पास कर रहे हैं यूजर को. तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि हमें कौन सा डेटा वहां पास करना चाहिए, हमें यहाँ कौन सा डेटा चाहिए, व्हाट्स आवर मोटो, विच डेटा वी नीड हियर, प्लीज राइट डाउन ऑन चैट. ओके देन ओनली या यूजर इनपुट. ठीक है, तो आप एक साइकिल है ये, दिस वन साइकिल, कि वो वहां से आया फिर वहां से गया फिर वहां से गया. ठीक है, आप यहाँ से जोड़ो, आप यहाँ से आप स्टार्ट करो यहाँ से. हमें यहाँ पे कौन सा डेटा चाहिए, हमें यहाँ चाहिए जो डेटा जो पर्सन है टाइप, जो पर्सन ने फिल किया फॉर्म में. ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डेटा यहाँ से आ रहा है भाई, ये पेलोड से आ रहा है. किस एक्शन से? क्रिएट, जब एक्शन है, जब एक्शन का टाइप क्रिएट यूजर है, जो भी पेलोड होगा वो यहाँ से डेटा आ रहा है. चलो ठीक है भाई, अब चलो पीछे बढ़ते हैं हम लोग, नो विल स्टार्ट फ्रॉम लास्ट अगेन. ये डेटा कहाँ से आया, ये डेटा आया यहाँ से एक्शन डॉट पेलोड से. यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप क्या है, क्रिएट यूजर है. ठीक है भाई, आते हैं क्रिएट यूजर में. ठीक है, यहाँ पेलोड से आ रहा है, तो हमें किसी तरह से ये जो डेटा है हमें पास करनी है. ठीक है, अब ये जो फंक्शन कहाँ कॉल हुआ है, ये कॉल हुआ है तुम्हारे फॉर्म पे. बस, तो चुपचाप से भाई यहाँ पे लिख के हेल्पर लिख के यहाँ पास कर दो डेटा इन ऑब्जेक्ट नेम कॉमा ईमेल, नो नेम ईमेल कॉमा व्हाट वी कॉल, let do not pass this password, we will pass only name and email. ठीक है, कितनी चीजें क्लियर हो गई, नेम एंड ईमेल. चलो चलो नेम एंड ईमेल क्लियर हो गया. ठीक है, नॉट टू मेक श्योर कि हाँ ठीक है हमें नेम ईमेल मिला है, लेट्स डू console.log in this action, in this reducer. Okay, I'll use again here curly braces and I'll put this in a return keyword in this curly braces. Okay, in curly braces, and I'll pass this console.log action.payload. Let's see whether we are getting it or not. Action.payload. ठीक है, ये करना है, लेकिन अभी सही नहीं हुआ. अभी 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 there are so many things which we have to do. First of all, चलो ठीक, कैसे कर, we have done this, we have also created one file sto.js. ठीक है,
अगर भाई समझ में ना आए तो परेशान ना होना, ठीक है, छोटी चीज है, स्टार्टिंग में लगती है बट उसके बाद थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, सिंस यू दिस इज फर्स्ट क्लास तो कोई दिक्कत नहीं है। ये store.ds है। क्या होगा ना, when you are building with when you are building heavy application, then you will have so many reducer, then you will have so many reducer, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, एक सिंपल सा एक ऐसा पेज लेते हैं, इसका जो नाम है ना store.ds, आप कुछ भी नाम रखो, कुछ भी अपना नाम लिख दो भाई। तो हमारे कन्वेंशन के लिए हम यहाँ पे सारे reducer को यहाँ कॉल कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं विल सी, ठीक है। We will have so many reducer, okay। तो सिंपली I have to build one store, ठीक है। एक बार को कैसे करते हैं दिखाता हूँ। So I have to import store from Redux। ध्यान देना कि ये मैं कहाँ से import कर रहा हूँ। कुछ चीजें मैं React Redux से import कर रहा हूँ, कुछ चीजें Redux से कर रहा हूँ। तो I have to build one store, ठीक है। एक हमको बनाना है store, ठीक है। ध्यान देना ये थोड़ा Redux का बॉयलर प्लेट है, ठीक है। I have to build one store, ठीक है। For that I need create store। That create store is inbuilt from Redux, okay। So if I write, I will write C, it will, maybe it will give me hint, combine on, C, it is giving me hint, create store, compose, combine reducer, okay। So first of all, I need create store, okay। It is clear from its name itself, create store, मतलब कोई store हम बना रहे हैं, ठीक है। Next, since no, what you can say, okay, ठीक है, since we are not using any asynchronous call, we'll use this Redux, this create store is enough, okay। Next, what we can do, then next I have to import all this reducer. Sorry, I have to import all the reducer which we have. We have only one reducer, that is user reducer. Okay, so import user reducer from Redux, then reducer, then user reducer. Basically क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम इस पेज पे, ध्यान से इस पेज पे हम सारे एडिट्स को कंबाइन कर देंगे, ठीक है, ताकि सारी चीजें एक पेज पे आ जाए हमारे पास। बस ये अच्छे से ना अच्छी कोडिंग हो, इसके लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन जो ये क्रिएट स्टोर है, ये तो करना पड़ेगा आपको, चाहे वो एक रिड्यूसर हो, चाहे एक से ज्यादा हो, ठीक है। तो ठीक है, हो गया ना। बट सिंस वी आर हैविंग ओनली वन रिड्यूसर, ठीक है, अगर आप if we will have so many reducer, then what we will do, we'll simply import them, we'll simply import them like this, okay, we have so many import, we'll import all this reducer on this page, we will try to import all the reducer on this page, okay। But at this moment we are having only one reducer, so we will use only one reducer, okay। Let remove this, okay। चलो ठीक है, ये हो गया। Next step, what we will do, first step, to create a store from Redux, second step, okay, second step to I'll comment it out, get all reducer, okay, sorry, reducer, okay, that's clear। Second, okay, let's take a cons initial state, this is necessary। अभी एक लैब बस learn with the syntax, this one, cons initial state, ठीक है। Next, now I will create a store, cons store is equal to, now we are getting a store, we will call this create store, we'll call this create store, create store, okay। It will take, it can take so many arguments, but first we'll pass this reducer, okay। And again, what you can say, I did some mistake, okay, leave it, we will not import all the reducer here, we will make one root reducer, okay। So I forget to do, let me create one new file, भाई परेशान ना होना, एक बार ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एक बार ही सारे कुछ करने दो। तो सर जिसका है ना बॉयलर प्लेट में वो बना रहा हूँ, ठीक है। तो वन मोर लास्ट थिंग, ओके, बिकॉज सिंस वी आर, आई एम जस्ट डूइंग ऑल दिस थिंग इन अ गुड वे। सो वी हैव वन स्टोर पेज। यहाँ पे मेन काम क्या होगा कि हम करेंगे क्रिएट स्टोर, हम एक स्टोर बनाएंगे बस, ठीक है। अब जो ये रूट रिड्यूसर है, नाम से कुछ क्लियर होगा कि भाई ये रूट रिड्यूसर, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, सारे रूट रिड्यूसर को कंबाइन करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, इंपोर्ट रिडक्स, ये जो काम कर रहे हैं ना, ये हम जो रूट रिड्यूसर काम कर रहे हैं, ये चाहते तो हम यहाँ पे कर देते थे स्टूडेंट में, लेकिन
हर चीजें एक डिफरेंट फाइल में हो, हर चीजें थोड़ा क्लियर हो, इसलिए मैंने अलग फोल्डर बनाया। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि आप जो मैं ये बना रहा हूँ ना बॉयलर प्लेट इसका रिडक्स का, आप इसको फॉलो करिए। ठीक है, इसलिए मैंने एक नया पेज बना दिया। ठीक है, लेकिन हम जब मैं when I was learning this Redux, I used to in the same page, but no, I've learned so many things from no, I watched so many videos, so I got to know no, this pattern's not following there. We are following, we'll follow this pattern. We have separate folder name as root reducer in which we will combine all this reducer. Okay, from Redux. Okay, now if I write C, it will give me hint. Okay, CO, yeah, we got it. It's combined reducer. ये समझ पा रहे हो आप, ये नाम से क्लियर है। कंबाइंड reducer मतलब क्या कुछ कंबाइन कर रहा है लोगों को, कई सारे reducer कंबाइन कर रहा है। ओके ओके, combined reducer. Okay, again I now here I will import all the store. I will import all the reducers. ठीक है, बिल्कुल परेशान ना होना, लास्ट में सारी चीज बताऊँ कैसे कहाँ से हुआ है। ठीक है, so import, what I have to import, I have to import all the reducer. We are having only one reducer, that is user reducer. Okay, so I will import user reducer. ठीक है, from Redux, then reducer, then user reducer. ठीक है, चलो again we are having only one reducer, that's why we had only one. Okay, but combine देखो अभी since we are having only one, तो यहाँ पे combined reducer कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर when you are building a heavy application, then भाई आपके पास एक नहीं यूजर का reducer होगा। मतलब मान लो आई एम बिल्डिंग ए स्टूडेंट ERP, ठीक है, मेरे पास एडमिन है, यूजर है, स्टूडेंट है, कई सारे लोग हैं भाई, कई सारे reducer हैं, then I have to use this combined reducer. लेकिन मैं जो बना रहा हूँ ये बॉयलर प्लेट, ये समझ लो कि आपका जो एप्लीकेशन हैवी हो या छोटा हो, आप ऐसे यूज करना, आप एक पैटर्न फॉलो कर लो, ऐसे करते रहना। ठीक है, चलो सो आई विल नो यूज दिस combined reducer. How will use, I'll let you know. Okay, so how we can use the you can export default, or what we can do, uh, cons root reducer. Let me see the pattern. Okay, then only we can make sure, because just want to follow you all with the same pattern. How we are doing, just forget the syntax. Okay, so desktop client, I'll give you a demo also ki how what I'm trying to say. See, this is my project where what I'm working on it. See, I have reducer, admin reducer, error reducer, helper, faculty reducer, root reducer. See, we had so many reducer. That's why I'm telling to you, just follow this pattern when you will build. See, we have so many actions. We have 3 actions. Okay, so we have store.js. What I have done, no, ignore this thing, because it's like when we will use this Redux thunk, you will call asynchronous thing, then we'll use this apply middleware. We'll do it in the next video. Okay, so yeah, cons you are they are going in the same way. Okay, so yeah, this is root reducer. We'll go to root reducer, but it is root reducer. Yeah, root reducer. Yeah, so I think screen is stuck. uh, I think screen is stuck. screen is stuck. Hmm. No, we are saying earlier VS Code. Earlier VS Code, yeah. Okay. Old one. You are not sharing whole screen, right? Okay. New share. Sorry. Reproduce share. Okay. Yeah. Sorry. So, is it Okay. some new screen game like recently? Yeah. Yes. Sorry. I just trying to give you some kind of what I'm telling. Ki in our application, what we are building, we have only one reducer. So we need not to combine all this reducer, because we have only one reducer. But since this is what I am building on this project. Okay, I have this reducer folder. In this reducer folder, I have so many reducer, so many admin errors, all these things, so many actions. That's why we need to combine all this reducer. So what I have done here, simply I have imported this combined reducer from Redux. Okay, that's been done, and I have imported all the reducer what I have except this store root reducer.
I have imported all the reducer, and what I've done, I've used this combined reducer, and I have given this this, it will take an as an object key value pair, faculty reducer, admin reducer. No, it will take as an object. It will take as a key and value pair. Okay, so let me just control C and I will cut it. Okay, so I'll screen say stop. Okay, okay, ठीक है. तो again new share screen. I'll share whole screen now. Okay, yeah. So again, I have done first step. What is the first step? First step is to get combined reducer from the Redux. Okay. Second step to import all the reducers, and third step is to combine. So how it will done? How it will done in the same way. Okay. Since we are having only one reducer, I'll okay, and I'll name as a user. I'll name as a user. Okay. This is a key, and key is depend on you. You can write down your name. भाई जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होता है ना की वैल्यू पेयर, बेसिकली जो कंबाइंड रिड्यूसर है, इट विल टेक वन ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट ले रहा है एज एन आर्गुमेंट. ओके, लेट मी राइट डाउन फ्रॉम scratch. What we'll do, export default. Okay, and it will we will default combine it will default will no combine reducer. Okay, we'll call this. Okay, now I have to pass one object. I have to pass one object. Let's see, pass. Now as you know that object contain items. ठीक है, ऑब्जेक्ट होते हैं आइटम, और एक आइटम होता है की वैल्यू. तो जो की है ये मेरे ऊपर है, ये तुम्हारे ऊपर है. जो तुमको कन्वीनियंट लगे अपने अकॉर्डिंग समझने के लिए वो तुम लिख दो. ठीक है, ध्यान देना, पर याद इससे उसे याद रहना चाहिए कि हम लोग बाद में जब हमको डेटा चाहिए हुआ तो हमें की वैल्यू याद आएगी. तो मान लो अभी एक ऑब्जेक्ट हम तुम्हारा है कोई भी, वेयर इज इक्वल टू नेम दीपक. ठीक है, अब तुमको यहाँ पे शेयर. नाउ इफ यू नीड द वैल्यू ऑफ नेम, व्हाट विल डू, सिंपली a डॉट नेम ऐसे करोगे ना आप. तो इन सेम वे जब भी हमको ये चाहिए हुआ रेड्यूसर, ये चाहिए रेड्यूसर चाहिए हुआ हमको काम हुआ, सिंपली हम क्या करेंगे स्टोर डॉट ये कर देंगे की वैल्यू जो हमने दिए रखा है. ठीक है, तो ज़्यादा परेशान ना हो, देखते हैं अभी यूजर, और हम लोगों ने दे दिया ये यूजर रेड्यूसर. ठीक है, चलो हटाओ इसको. ठीक है, अब हम लोगों ने सारे रेड्यूसर कंबाइन कर दिया. मेरे पास एक ही रेड्यूसर है, कोई बात नहीं भाई, आगे देखा जाएगा कोई जो भी है. तो ये इतना काम हो गया. ठीक है, now we'll come to store.js. ठीक है, now I'll create a store. Okay, first of all I have to import this root reducer. Import root reducer from no that is Redux. Yeah, root reducer. अब first of all I have, देखो ये पेज का नाम क्या है, पेज का नाम है स्टोर. ठीक है, आप ध्यान देना कि आप ऐसे कुछ नाम रखो ताकि आप क्लियर रहे कि हाँ भाई किस पेज पे क्या करना है. हमने नाम दिया स्टोर का, मतलब कि यहाँ पे हम स्टोर को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं स्टोर को, और ये नाम से क्लियर है. जस्ट इंपोर्ट करो क्रिएट स्टोर फ्रॉम रिडक्स, कर दिए. ठीक है, अब यहाँ पे स्टोर कर दिए, क्रिएट स्टोर कर दिए यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे यू कैन पास सो मेनी आर्गुमेंट, जितना तो पास करना है पास कर दो. ठीक है, ध्यान देना ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा. ऑब्जेक्ट कौन सा ले रहा था, एनीवन कैन टेल which was taking object, combined reducer was taking object. combined reducer. ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ध्यान देना, यहाँ गलती मत करना. ठीक है, मैं कभी गलती करता, मेरे पास वो एरर आ रहा था. ठीक है, अब जो है यू कैन पास मेन आर्गुमेंट, लेकिन फर्स्ट आर्गुमेंट ले लेता है कौन सा रेड्यूसर, क्या कौन सा रेड्यूसर. तो आई विल इंपोर्ट रूट रेड्यूसर. ठीक है, सेकेंड आर्गुमेंट इनिशियल स्टेट. तो ये मान लेता है, ये समझ लो कि ये रेड्यूसर ये वो चीज है, ये रट लो, बस ऐसा करना होता है, रट जाओ इसको. ठीक है, इनिशियल स्टेट. एंड थर्ड आर्गुमेंट, अगर हम असिंक्रोनस कॉल कर रहे हैं विल पास हियर रिडक्स फंक्शन. तो अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई भी, अगर आप ध्यान देना, अगर आप कोई असिंक्रोनस कॉल कर रहे हो रेड्यूसर में, एक तो आप कॉल करते हो कंपोनेंट में, वो छोड़ो, अगर आप कॉल कर रहे हो क्या बोलते हैं इधर रेड्यूसर, किसी भी रेड्यूसर में, किसी भी इधर. ठीक है, तो आपको वहाँ पे रिडक्स फंक्शन चाहिए होता है. वो लोग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे मंडे को. ठीक है, क्या होता है रिडक्स फंक्शन, या फिर हम लोग सैटरडे को पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो हम लोग पास करते हैं थर्ड आर्गुमेंट. अभी फिलहाल के लिए हमारे पास रिडक्स फंक्शन नहीं है, अब फिलहाल के लिए हमारे पास कोई असिंक्रोनस कॉल नहीं है, विल नॉट पास थर्ड आर्गुमेंट. इतना हो गया बस. अब भाई एक्सपोर्ट डिफॉल्ट
स्टोर, बस इतना कर दो, कर दिया भाई, ठीक है। चलो इतना हो गया। पहली बात, हमने क्या किया रूट रिड्यूसर में, हमने कुछ नहीं किया है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, हमने कुछ नहीं किया है। हमने क्या किया है, हमने कंबाइंड रिड्यूसर को कॉल किया है रिडक्स से, देख लो, हमने कंबाइंड रिड्यूसर कॉल किया रिडक्स से। उसके पास से मेरे पास जितने भी रिड्यूसर हैं, वट एवर रिड्यूसर वी हैव, वी ट्राई टू इनपुट ऑल द रिड्यूसर and we have put all this reducer, imported reducer in this combined reducer, and it will take object, ध्यान देना, it will take object, and this key value depend on us, depend on you, whatever you want to name, want to know, give the name, you can name, okay, this ये तो हो गया भाई, and we'll come to this store.js. Store.js is clear from its name itself, क्या something, no, something we are creating store, चलो ठीक है भाई। Again, if you are creating a store, you have to import from Redux, okay, okay, you have to import it, and again create stored 3 argument, first argument all the reducer, ठीक है, all the reducer, second initial state, third if you are using any Redux thing or any middle, any middleware type things, we are not using any middleware, ठीक है, तो we are not using third argument, ठीक है। अब ये जो सारे reducer कहाँ से मिलेंगे, हमको मिलेंगे रूट reducer से, यहाँ से मिलेंगे, ठीक है, हमने कर लिया वहां से। अब we will export default, कर दिया। अब come to index.js, come to index.js where you are no document.get element by id, ये आप कर रहे हो, ये जहाँ ये पेज पे कर रहे हो ना, ये यहाँ आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे कॉल करना है स्टोर को, ठीक है। हाउ वी विल डू, विल सी, वन सेकंड, yeah. So first of all, we will import provider, just name import provider, ध्यान देना कैपिटल पी है, ठीक है। क्रिएट स्टोर कंबाइंड स्मॉल सी था, ये कैपिटल पी है, और आपको डाउट हो कि स्मॉल पी कैपिटल पी है, आप पहले इंपोर्ट ना करना, पहले फ्रॉम कर देना, कहाँ से करना चाह रहे हो, ऑटोमेटिकली वीएस कोड विल गिव यू हिंट, ओके, कहाँ से करना है इंपोर्ट, तो वी विल इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट रेडक्स, जो प्रोवाइडर है वो रिडक्स को और रिएक्ट को मिलाता है, ठीक है, तो वी विल इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट रेडक्स,